Hello friends, once again I welcome you all to my channel Tech Brick. Now today's topic is data types. In this video we will cover types of data, mutable and immutable types of data. So let's start. The very first topic is data type. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी कोड बनाने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है डेटा. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डेटा. सो अगर हम कुछ अच्छे से अच्छा कोड भी लिख रहे हैं लेकिन अगर हमें डेटा की अंडरस्टैंडिंग नहीं है सो दैट कोड इज ऑफ नो यूज. So data becomes a very important part in the programming. So that is why this topic is also very important. So whenever we are learning any language, it is very important to understand the data we can use in that particular language or the program we are creating. So which type of data we are using. So we will discuss the types of data that are supported in Python. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, पाइथन डेटा के साथ बहुत फ्लेक्सिबल है. किसी भी लैंग्वेज में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास जितना पाइथन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है डेटा के साथ प्ले करने के लिए. इन माई लास्ट वीडियो मैंने आपको वेरिएबल के बारे में बताया था कि वेरिएबल क्या है. वेरिएबल जब भी हम क्रिएट करते हैं पाइथन में तो हम एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट करते हैं टू स्टोर सम डेटा. ठीक है, जब हमें डेटा स्टोर करना है तो ऑब्वियसली उस डेटा का एक टाइप भी होना चाहिए. तो जब भी हम एक वेरिएबल यूज करते हैं हमें पता होना चाहिए हम उसमें कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं. अब पाइथन ने हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हम सिंपली उसको डिक्लेयर करें और वो अपने आप डिसाइड करेगा कि ये कौन से टाइप का डेटा है. क्या हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रिंग्स यूज कर रहे हैं, लिस्ट हैं, डिक्शनरीज हैं. तो वी हैव टाइप ऑफ डेटा. अब यहाँ पे इस स्लाइड में आप देखिए मैंने एग्जांपल 1 में लिखा है a इक्वल्स टू 5. सो व्हाट इज a हियर? a इज अ वेरिएबल. ठीक है, a इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोरिंग सम वैल्यू. नाउ व्हाट इज द वैल्यू दैट इट इज स्टोरिंग? 5 इज द वैल्यू. ठीक है, सो वेरिएबल a इज रेफरिंग टू अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप. अब ये जो 5 वैल्यू है ये कौन से टाइप की है? इंटीजर टाइप की. नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने लिखा है a इक्वल्स टू हेलो. So again a is a variable that is storing or that is referring to a value of string type. अब कैसे पता चला कि 5 एक इंटीजर है और hello एक string है? तो जो भी strings होंगी उनको हम quotes में enclose करेंगे. ये हम आगे अपनी further slides में भी देखेंगे. Right? This is the chart of data types. Broadly, data types are categorized into 5 categories: number, sequences, none, dictionary and set. Set हमारे कोर्स में नहीं है तो we will learn about number, sequences, none and dictionary. Numbers are categorized into integer, floating, complex and integers are further categorized into boolean. So we will see one by one. First one is numbers. Numbers में हम सबसे पहले integers लेंगे और integers के साथ हम boolean भी लेंगे. So integers are the whole numbers जिनके पास कोई decimal point नहीं होता. Whole numbers, it can be positive number, it can be negative numbers. Examples are given over here. And the next one is boolean. Booleans are also whole numbers, but booleans की सिर्फ 2 ही types होती हैं, either true or false. हम एक coding language की बात कर रहे हैं और मशीन जो है वो सिर्फ 2 ही values समझती है, 0 and 1, true and false. तो जब भी हमारे पास 0 होगा 0 रिप्रेजेंट करेगा false को और 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ट्रू को. तो यहाँ जो boolean डेटा टाइप है दैट इज अ सब टाइप ऑफ प्लेन इंटीजर्स एंड इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे आप देखो जब मैंने bool 0 लिखा है तो इट विल गिव मी द आउटपुट फॉल्स एंड जब मैंने bool 1 लिखा है तो इट विल गिव मी द आउटपुट एज ट्रू. Next we have floating point numbers. So how we represent floating point numbers? With the help of decimal point. A number having fractional part is a floating point number. So it is having a fractional part. So the decimal point indicates that it is a floating point number. Here you can see example 1.2, 0.5, 59.8, 6.0 and any other type of number can be there. Now floating point numbers can be further written in 2 forms. First one is the fractional form and other is the exponent form. So here we have 2 forms, fractional form and exponent form. Exponent form is a form where we shift the decimal point and then we write the exponent value as
2। तो यहाँ पे हमने अपने डेसिमल पॉइंट को 2 प्लेसेस से शिफ्ट किया है, दैट्स वाई द एक्सपोनेंट वैल्यू इज 0, 2. This is just a way of representing the floating numbers, that's it. Next we have are the complex numbers. Complex numbers are represented in the form of a plus b j. ये बिल्कुल सेम वही फॉर्म है जो आपने मैथ्स में देखा है. यहाँ पे आयोटा होता है तो आप a plus b i लिखते हैं, बट पाइथन में वी राइट इट एज j. j की वैल्यू है √-1. अब यहाँ पे जो a है हमारा, a is the real part and b is the imaginary part. So if I'll show you the same on the screen. So let's execute it practically. I'm taking a variable n and the value of n is 5. So if I want to know the type of this variable n, if I want to know how the system is treating this variable n, so I can use type of n. So you can see here I get the output as class int. So this n variable is belonging to the class and the name of the class is int. So this n is an object of class int. Int means integer. And if I write here n equals to 5.1. So let's print the type of this n now. So the system is giving me the output as float, class float, right? Now let's talk about the complex numbers. So in the complex numbers, as I have told you, the form is a plus b j. So here I am writing 5. Let me take as the variable 5 plus 6j. So the type of n here is complex. So it is of the type complex. I want the separate parts. So if I write it like print n dot real, if I want to print the real part of this complex number, then I will get by n dot real, right? So if I want to have the imaginary part, so I should use n dot, and I will get the output as 6, right? So 5 is the real part and 6 is the imaginary part, as I have told you. I can also write like this 6j. Okay, in that case the real part is 0. So if I print n dot real, so here you can see the real part is 0 and the imaginary part is same, that is 6j, right? So in this way the complex numbers are represented. Now let's talk about the Boolean values. What bool 0 will give me? Bool 0 will give me false and bool 1 will give me true. ठीक है, bool 0 is false and bool 1 is true. Now practically हम कहाँ इसको यूज करते हैं? हम ऐसे तो यूज करते हैं नहीं कि bool 0 की वैल्यू क्या है, bool 1 की वैल्यू क्या है. Let's say I want to execute one statement if 5 is greater than 2. So it is giving me the output as true. So this is of type bool. ठीक है, because the answer should be yes or no. If I am writing 5 is less than 6, so then it will also give me true, and if 5 is greater than 9, so then it is giving me the output as false, right? This type of statements we get the values as bool type, right? These are the numbers data type. We have covered integers, float, complex and bool. Next one. So the next topic is sequences. In the next topic we have strings, lists and tuples. Strings are very important. See, when we are working on the real time data, तो real time data में mostly हम लोग strings के साथ ही work करते हैं, characters के साथ या strings के साथ work करते हैं, किसी का name, किसी का address, like these values we use in real time situations. One more important thing is there, we don't have any character type in Python. C, C++ in languages में आपने you must have seen that कि we have a character type also, but here we don't have any character.
कैरेक्टर इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग हेयर, बट सिर्फ डिफरेंस ये होता है कैरेक्टर का जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो 1 होती है, but that is a string only. So a string is a sequence of characters and each character is uniquely accessed using its index. So we have number of characters in a string और हर एक character की एक वैल्यू होती है जिसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं. We have two type of indexing. We have forward indexing as well as we have backward indexing. So forward indexing 0 से start होती है and backward indexing -1 से start होती है. So let's say for an example, let's say I have a string str and the value is hello. पता कैसे लगता है कि हम एक स्ट्रिंग राइट कर रहे हैं? स्ट्रिंग्स आर ईदर इनक्लोज इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स. तो कोई ऐसी वैल्यू चाहे वो हमें दिखने में इंटीजर लग रही हो, बट अगर वो कोट्स में है दैट विल बी कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग ओनली. आई शो यू द सेम इन प्रैक्टिकल ऑल्सो. Here in this slide we have string of 0, that is this string of 0. The value of string of 0 is h and it is same as the string of -5. तो चाहे आप forward indexing use करें, backward indexing use करें, it is the same thing. We will get the same values depending on the index we are using. If I execute the same practically, you can see here str equals to, I have used hello, and if I want to print the type, let's see the type first. So type of this string is str, ठीक है. And let's say I am using n equals to quotes में I have written 5, ठीक है. Now this time I have written 5 in the quotes. So if I print the type, then this time I'll get the class as string. This is not an integer now. If I am writing str equals to hello and if I want to print str of 0, so I'll get the h, right? And if I want to print str of -5, the same I'll get. So now you have noticed that चाहे हम str 0 use करें, चाहे हम str -5 use करें, we are getting the same value as h, right? So let's see what is the length of this string. As you have seen that length of n is 1 because I have written n equals to 5. So only one character is there. But if I will print the length of str, then I'll get the value as 5. ठीक है? The value is 5 because there are 5 characters in this string. As you can see here, we have 5 characters. So 0 से 4, क्योंकि 0 से start हो रहा है इसलिए last value हमारे पास एक कम रहती है, that is length -1. But the total number of characters in this string are 5, right? So in the same way we have list also, in the same way we have tuples also. These are also sequential data types. So list and tuples are the type of built-in data structures in Python that are used to hold any collection of objects. So अगर मुझे integers भी, strings भी, list भी, floats भी, bool भी, इस तरह की सारी values अगर मुझे एक साथ डालनी है किसी डेटा टाइप में, so I can use list, I can use tuples. List को कैसे शो किया जाता है? Here you can see we use square brackets. And tuples को कैसे शो किया जाता है? We use curved brackets. Indexing बिल्कुल सेम रहेगी इनकी. Forward and backward indexing 0 से start होगी forward and backward start होगी -1 से. All the things will remain same except that lists are mutables and tuples are immutable. So the meaning of mutable here, this is very important topic from the examination point of view also, right? So what is the meaning of mutable? It can change its value at runtime, and immutable, it cannot change its value. Once you assign the things, once you assign the objects,
we cannot change the values. We have to create a new one, right? We have to create a new one, but we cannot change the values. So we can say that tuple is a constant list. The last data type that we'll discuss in this video is dictionary. The dictionary is an unordered set of comma-separated key value pairs within curly braces. So curly braces में हम dictionaries को define करते हैं, declare करते हैं. Here I have declared one dictionary and the name of the dictionary is employee details, and I have 3 keys and 3 values. Keys are name, age and address. Values are XYZ 24 and Delhi. तो यहाँ पे मैपिंग होती है keys and values की. The point to remember here is keys should be unique within the dictionary. Keys को हम repeat नहीं कर सकते हैं. They should be unique. This is also a data type in Python. So today we have covered the data types of Python. Hope you will like the video and do mention in the comment section also. Till then, keep learning. Thank you.